Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistaki Krishna Swadamo Bhagate Dhamma Jnana Divisaha Kalo Nashta Dishamesha Paranoko Dunodita Grantaraj Srimad Bhagwatam Ki Jai. This morning we're very fortunate to be reading Srimad Bhagwatam, Canto 4, Chapter 25, Text 42. Kasyamanaste bhuvi bhoga bhogayo Striyana sajjad bhujayor mahabhuja Yunata bhagadimalam grinodata Smita balokena charatya pohitam Smita balokena charatya pohitum Kasyamanaste bhuvi bhoga bhogayo Kasyamanaste bhuvi bhoga bhogayo Striyana sajjad bhujayo mahabhuja Striyana sajjed bhajayor mahabhuja Yonata bhagadimalam grinodata Yuvanata vargadhimalam gunodata Smita balokena charatya pohitam. Smita balokena charatya pohitum. Please chant. Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Striyana sajjed bhujayor mahabhuja Yuvanata vargadhimalam gunodata Smita balokena charatya pohitum Kasyamanaste bhuvi bhoga bhogayo Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Sajjed bhujayor mahabhuja Striyana sajjed bhujayor mahabhuja Yonata vargadhimalam grinodata Yonata vargadhimalam gunodata Balokena charitya pohitam Smita balokena charatya pohitam Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Striyana sajjed bhujayor mahabhuja Yonata vargadhimalam gunodata Smita balokena charatya pohitam. Mother, please. Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo Striyana sajjed bhujayor mahabhuja Yonata vargadhimalam gunodata Smita balokena charatya pohitum Kasyamanaste bhuvi bhogi bhogayo
स्त्रिया न सच्चे भुजयोर्महा योनाथवर्गादिमलं गृणोदता स्मितावलोकेन चरत्यपोहितम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ कस्या किसका, मन मन, ते तुम्हारा, भुवि इस संसार में, भोगी भोगयो सर्प के समान शरीर वाला, स्त्रिया स्त्री का, न नहीं सज्जेत आकर्षित हो जाता है, भुजयो भुजाओं द्वारा, महाभुजा ए बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहु, या जो अनाथ वर्गा हम जैसी अनाथ स्त्रियों का, अधीन मन का संताप, अलम सक्षम घृणाउद्यत छेड़छाड़ से, स्मित अवलोकेन आकर्षक हंसी से, चरती विचरण करता है, अपोहितुम कम शांत करने के लिए। अनुवाद हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकृष्ट न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। तात्पर्य, जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। इस श्लोक में अनाथ वर्ग का शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और आ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में कामवासना हिलोरे लेने लगती है। अतः पिता का धर्म है कि वय संधि आते ही वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी कामवासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वय संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की कामवासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे गुरो ज्ञानदा दीनबन्धो स्वानन्ददात करुणैक सिन्धो वृन्दावनासीन हितावतार प्रसीद राधा कनय प्रधान। वन्दे रूप सनातनो रघुजगो श्रीजीव भगवान्। वन्दे नन्दाद्भुतस्वयं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादात् सद् भक्तिशास्त्रभवदकः। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाये तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। It is said in this world, love makes the world go round. जैसा हम देखते हैं पूरे संसार के अंदर लव makes the world go round.
जैसा पूरा संसार प्रेम के पीछे घूम रहा है। You've heard this saying before? Love makes the world go round. Pyar. सो आपको भी ऐसे लगता है कि पूरा संसार प्यार के पीछे घूम रहा है। Because there's no movie industry without pyar. There's no music industry without pyar. तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जो प्यार के बिना चलती है। But it's not actually love. Lust makes the world go round. Lust makes the world go round. बट एक्चुअली में काम वासना है जो पूरे पूरे संसार को घुमा रही है। What happens in the material world? क्या होगा अगर ऐसा ना हो? A man sees an attractive woman, woman sees attractive man, and they exchange glances. तो जैसे एक आकर्षक स्त्री को देखते हैं या आकर्षक पुरुष को देखते हैं, उनकी आंखें मिलती हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। This is a reflection of spiritual reality. ये वास्तविकता में एक परिछाया है आध्यात्मिक जगत की। Because Srimati Radharani's eyebrows are like bows. And when she releases the arrow of her glance, Krishna becomes completely subdued. तो राधा रानी की जो भौहें हैं वो एक धनुष के समान है, और जब उनसे वो एक बाण छोड़ती है तो कृष्ण उससे अट्रैक्ट होते हैं। So in the material world, man and woman, they exchange glances and lust begins from there. तो इस भौतिक जगत में भी जो जानवर हैं वो भी ऐसे एक्सचेंजेस करते हैं। The desire to touch, the desire to embrace, the desire to unite. तो ये भी चाहते हैं कि एक दूसरे को छुएं, एक दूसरे को संपर्क करें। And the lady says to the man, "Do you love me? प्रश्न आता है कि क्या आप वास्तविकता में प्यार करते हैं? Do you really love me?" क्या वास्तविकता में आप प्यार करते हैं? And the man says, "With all my heart, I love you." मैं पूरी तरह से आपको प्रेम करता हूँ। This mantra will conquer, practically speaking, any woman. I love you. तो ये किसी भी स्त्री का हृदय भेद कर सकता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Oh, he loves me. He loves me. तो सेम एक्सप्रेशन के साथ वो मुझे प्रेम करता है। And the man says, "Yes, I love you. With all my heart, I love you." तो पुरुष कहता है कि हाँ, पूरे हृदय से मैं आपको प्रेम करता हूँ। Can we sleep together now? तो क्या हम साथ साथ सो सकते हैं? Isn't this what's going on in the material world? यही नहीं चल रहा है पूरे का पूरे भौतिक संसार। This is exactly what's going on in the material world. पूरे संसार में यही चल रहा है। Yet people criticize our perspective that a woman should be protected, she should be married, she should have relationship with one man, and a man should have relationship with one woman. वास्तविकता में लोग इसकी निंदा करते हैं कि एक स्त्री को केवल एक पति के साथ रहना चाहिए और उसी से प्रेम करना चाहिए। If you have a valuable piece of jewelry, you keep it on your front porch where anyone can take it from you. तो अगर आपके पास में कोई कीमती जेवर है तो आप उसे छुपा कर रखना चाहेंगे, नहीं तो कोई उसे ले जाएगा। Because it's very valuable, you lock it up, you keep it safe where it's protected. तो इसे छुपा कर रखेंगे तो वो सेफ रहेगा उस जगह पर। Women deserve to be protected. This is not exploitation. स्त्रियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये उनका हनन नहीं है। Because what women offer to society is irreplaceable. और क्योंकि जो स्त्रियां हैं हमारे पूरे के पूरे संसार में वो इररिप्लेसेबल है, उनको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Mother's love is irreplaceable. बट जो प्रेम है ये रिप्लेसेबल है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। And children that grow up without mother's love and guidance grow up crooked. Children without mother's love and guidance grow up crooked. बिना माता के प्रेम के बच्चे ठीक से ग्रो नहीं करेंगे। Mother is our first guru, right? जो माता है उनकी पहली प्रथम गुरु है। She teaches us how to dress, how to eat, what is safe, what is not safe. माताएं बताती हैं कि कैसे ड्रेस करना है, कैसे रहना है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, How to use the bathroom, कैसे अपने बाथरूम को यूज करना है, how to eat. Food goes here in your mouth, not in the ear. Yeah. तो कैसे खाना खाना है, खाने को केवल मुंह में डालना है, कान में या सर पे नहीं। You see little babies, they're putting food everywhere. Oh no, it goes here in your mouth. तो जो बच्चे देखे होंगे कहीं भी उनके मुंह पे खाना लगा होता है, तो माताएं बताती हैं कि मुख से खाना खाना चाहिए। Mother is our first guru. तो माताएं जो है उनकी प्रथम गुरु है। So what women give to society is irreplaceable. तो इस पूरे जो हमारे कम्युनिटी है इसमें जो माताएं हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। And Bhagavad Gita tells us the same thing. भगवत गीता भी से यही बताती है। Adharmadi bhavat Krishna pradushanti kulastya stishu dushtashu vaishnaya jayate varna shankara. If women as a class are polluted, what is the result? Varna shankara.
अगर जैसे भगवत गीता में बताया गया कि अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, वर्ण संकर आएंगे, unwanted children, useless children. ऐसे बच्चे आएंगे जिनकी इच्छा नहीं की जा रही है, They बिना इच्छा के, they have no inclination for dharma or spirituality or even moral life. तो उनका आकर्षण धर्म के प्रति नहीं है। And we see this in our society. ऐसा ही हम देखते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, You समाज see में। these children, they walk up offering obeisances, तो हम देखते हैं कि offering their obeisances to seniors, कोई सीनियर्स को ओबेसेंस या प्रणाम नहीं करते, touching the feet of mother and father, माता पिता के या किसी सीनियर के, singing kirtan, सिंगिंग कीर्तन, playing musical instruments. और जो जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें बजाते हैं। Little kids, they can barely reach the end of the mridanga, but they're playing mridanga like a pro. पर यहाँ पर जो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं वो मृदंग ऐसे बजाते हैं जैसे कितने एक्सपर्ट हैं। And what do we see from families in degraded countries like America? पर जैसे हम परिवारों को देखते हैं जैसे पिछड़ी हुई कंट्री हैं अमेरिका जैसे, Not, please accept my humble obeisances, Prabhu. No, hey dude, what's going on, man? तो वैसे प्रणाम करके नहीं बोलते, वो बोलते हैं What about some drugs? ओ छोरे कैसा चल रहा है। Why? क्यों? Because in many cities in America, you know what the most confusing day is? तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, Father's Day. Father's Day. फादर्स डे, पिता दिवस। Because they have no idea who their father is. तो उनको क्योंकि पता नहीं है कि वास्तविकता में पिता कौन है। But still, they criticize our perspective that women should be protected and cared for and given children and satisfaction and clothes and response, a nice place to live. फिर क्या करते हैं कि जो स्त्रियों हैं उनको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, आदि आदि। Srila Prabhupada's wife told him when their daughter was 12 years old that if you don't get my daughter married, I will commit suicide. श्रील प्रभुपाद जी की जो पत्नी है उन्होंने बोला था कि अगर मेरी जो पुत्री है उसका उम्र 12 साल हो गई है और इसका विवाह नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। Srila Prabhupada's wife was 14 when they were married. श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी 14 साल की थी केवल जब उनका विवाह हुआ था। Jai Jagannath. Because this principle that Srila Prabhupada talks about, that the first man a woman is with, she gives her heart to. तो ऐसा बताया गया भागवत में, जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस पहले व्यक्ति से स्त्री मिलती है वो उसी को अपना हृदय दे देती है। But in demoniac society, this principle is lacking. पर ये जमनिक से जो आसुरी समाज है इसमें ये जो सिद्धांत है वो कहीं पीछे रह गया है। They may give their heart to 10 men before they even get married to one. तो आज की जो समाज में तो लोग 10 पुरुषों से मिलना चाहेंगे शादी से पहले। And then they say child marriage is a very bad thing. और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो बाल विवाह है वो बुरा है। This is Vedic culture. पर ये वैदिक कल्चर है। To make strong relationships, unbreakable relationships between man and woman for the protection of society. इसके साथ प्रगाढ़ संबंध बनते हैं जो रिक्वायर्ड है समाज के लिए। Because the family unit is the basic building block of a successful, prosperous, spiritual culture. और परिवार का एक जोड़ में रहना पूरे सोसाइटी को नींव है एक तरीके से। Because why does lust arise in puberty? पर ये ऐसा जो काम वासना है ये किशोरावस्था में क्यों आती है? Is it a symptom of some degraded person? क्या ये कुछ ही पिछड़े हुए समाज का सिम्टम है? It's perfectly natural. It's called hormones. At a certain point in life, the hormones in your body start manifesting. Man develops secondary sexual, hair grows on his face, he gets a deep voice, his body gets strong. Woman develops breasts, she menstruates. These are hormones. This is a perfectly natural thing. तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है कि जैसे पुरुष की दाढ़ी आने लगती है वैसे ही स्त्री में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। So how to deal with this phenomenon? तो इससे कैसे इसके साथ में डील किया जाए? In a civilized way. एक सभ्य तरीके से। Most people get married. बहुत से लोगों को नहीं पता है। And this is the most natural thing. पर यह बहुत ही प्राकृतिक है। A man wants to embrace a woman. One wants to be embraced by the serpentine arms of a young man. एक पुरुष स्त्री को आलिंगन करना चाहता है और स्त्री भी चाहती है कि वो सर्प जैसी भुजाओं के अंदर आलिंगन करे उसको पुरुष। Now, having said that, we should understand that the whole purpose of Varnashram Dharma is to reduce
attraction to the opposite sex. पर जो पूरा का पूरा हमारा वर्णाश्रम धर्म है वो ये बताता है कि दूसरे लिंग के बजाय दूसरे पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षक कैसे नहीं हुआ जाए। Not to increase it. Not to increase it. नॉट ये इसको बढ़ाना नहीं है कम। This is demoniac civilization, ये आसुरिक समाज है where they fan the fire of lust and intentionally make people insane to satisfy their senses. ये एक तरीके से जानबूझकर हवा देने वाली बात है किसी को उस प्रवृत्ति में करने के लिए। And what is the result? और उसका क्या रिजल्ट रहेगा? Women in Kali Yuga are treated like a newspaper. और कलयुग के अंदर स्त्रियां ऐसे धोखा दिया जा रहा है उनको जैसे कि न्यूज़पेपर अखबार को दिया जाता है। What is a newspaper? You read it once, throw it away, done. तो जैसे हम न्यूज़पेपर को एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते हैं वैसे स्त्रियों को भी फेंक देते हैं। I enjoyed your body, now I have no other need for you, goodbye. तो अब मैंने आपके शरीर का आनंद ले लिया है, आप जाइए, बाय। This is demoniac culture. ये आसुरिक प्रवृत्ति है And this principle is glorified as a good thing. और ये सिद्धांत ऐसे ग्लोरीफाई किया जाता है इसका जैसे बहुत ही अच्छी चीज है। In Western culture, parents saying, "Oh, let my daughter enjoy life a little bit before she settles down into marriage." तो पश्चिमी देशों में ऐसा बोला जाता है कि मेरी बेटी को थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो उससे पहले कि वो सेटल हो जाए अपने घर में। And if she gets pregnant, that's just another form of birth control. और अगर वो किसी तरीके से गर्भवती हो जाए तो ये एक और दूसरा तरीका है बर्थ कंट्रोल का। Is this a civilized society क्या ये एक सभ्य नागरिक समाज है that promotes this kind of thought process, this kind of so-called morality? जो इस तरीके के भावों को जन्म दे रहा है इन पूरे समाज में? This is a demoniac society. ये आसुरिक समाज है। And they promote sex as the highest thing achievable in life. संभोग करना ये सबसे बड़ी चीज है पूरे के पूरे लाइफ में। Prabhupada Dilli ka laddu. Dilli ka laddu. ये दिल्ली का लड्डू। He told us a story. Man, there's this very delicious laddu you get only in Delhi. तो वो बोलते हैं वैष्णो कंट्रीज में कि ये जो दिल्ली का लड्डू है बहुत ही अच्छा होता है स्वाद में, तो ये केवल दिल्ली में मिलता है। बहुत स्वादिष्ट. बहुत So स्वादिष्ट। delicious laddu. बहुत ही स्वादिष्ट है दिल्ली का So the लड्डू। man thinks, I have to go to Delhi and taste this laddu. तो लगा कि दिल्ली जाना चाहिए और इस लड्डू का आस्वादन करना चाहिए। But then when he tastes it, oh, it is just a laddu. लेकिन जैसे ही उसका आस्वादन किया ये तो लड्डू ही है। They promote this thing as sex is the highest achievement in human society. The dogs do this, the pigs and crows do this. और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली भी इसी चीज को करते हैं। But media force feeds this idea in human society to make people like pigs and dogs. और जो हमारा आधुनिक मीडिया है वो इंड्यूस करता है, वो प्रेशर करता है, डालता है, दबाव डालता है कि इस चीज के लिए लोग आकर्षित हों। I have an app on my mobile phone called Drik Pancham. Drik Pancham. मोबाइल फोन में दृक पंचांग। It's very handy. You look at what is Vara, what is Titi, what is Nakshatra, what is Yoga. Very handy. उसमें अलग अलग चीजें क्या क्या नक्षत्र है, क्या तिथि है। So I open it up and what comes up is I'm cheap and don't want to pay for the paid version. What comes up an ad? Completely pornographic ad, explicit pornographic ad. उन्होंने देखा कि क्या उसमें अगर दूसरा एडवांस वर्जन लेते तो क्या था उसमें पूरे का पूरे उसमें। I don't want to see this. I didn't ask to see this. नग्न चित्र आते हैं। I don't want to see this. मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। But they force this on society. और वो दबाव डालते हैं देखने के लिए पूरे समाज में। Society has become addicted to pornography, पर अभी समाज पूरा का पूरा आकर्षित हो जा रहा है इन नग्न पिक्चरों। which is the most destructive thing you can do for your spiritual life. और ये सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज है हमारे आध्यात्मिक। Because it is 180 degrees different from prema is kama. और ये पूरी तरीके से 180 डिग्री अलग है काम और प्रेम से। I saw in a magazine called Time Magazine, the cover page article was pornography. तो एक मैगजीन है टाइम मैगजीन जिसका प्रथम पृष्ठ जो था उस पर लिखा। In that article, it described this. This article came out maybe 10 years ago. It said there is one website that gets 2.5 million hits. तो उन्होंने उस मैगजीन का जो प्रथम चित्र था वो नग्न था, पोर्नोग्राफी पे था और उसके अंदर आर्टिकल था जिसपे उनको लगभग 25 लाख लोगों ने Every day.
हर दिन पढ़ते हैं। उस वेबसाइट पर 25 लाख। वेबसाइट पे, उनकी मैगजीन की वेबसाइट पे लगभग 25 लाख रोज उसको देखते हैं। And in the last 10 years, it's probably doubled. और पिछले 10 सालों में तो लगभग 50 हो गए होंगे। To make people crazy for what the animals do. ये लोगों को पूरी तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, वो पागलपन कर रहे हैं जैसे जानवर करते हैं। So Varnashram has a system for this problem. तो वर्णाश्रम में इसका एक अलग A man wants a woman wants a man. जैसे स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। So be married, be a gentleman, be a lady, be committed to each other. तो इसमें वह दोनों विवाह करते हैं, एक सभ्य पुरुष और स्त्री की तरह। And in course of time become free from the desire. और धीरे धीरे वह इस डिजायर से भी फ्री हो जाते हैं। And by transferring this desire for love and acceptance to Krishna. और ये जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है डिजायर लव से, प्रेम से कृष्ण के लिए। Because what is this? What is this phenomenon? Man wants a woman, woman wants a man. Where does it come from? ये कहाँ से आया है कि एक स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए? It comes from Radha Krishna. ये राधा कृष्ण से आता है। We read in Srimad Bhagavad Gita. जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, Uddamula manakshakam ashwatam prahorabhigam chandamsi yasya panani yastam veda savedavid. There is a tree with its roots up and its branches down. जैसा भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, श्लोक बताया प्रभु जी ने, तो उसके एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर की तरफ है। Where do we see such a tree? ऐसा पेड़ हम कहाँ देखते हैं? Only in a reflection. ये ऐसा केवल छाया में दिखता है। And a reflection isn't reality, it's not real, it doesn't exist. छाया लेकिन वास्तविकता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। But for reflection to exist, there has to be reality. There can't be a reflection of a mango tree unless there's a mango tree. जो छाया है तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं पेड़ भी होगा, क्योंकि जब तक आम के पेड़ की छाया है तो आम का पेड़ जरूर होगा। But can you pick mango fruits from a reflection? पर हम आम की छाया से आम का फ्रूट नहीं ले सकते। In a nutshell, this is our whole material experience, trying to enjoy a reflection that doesn't even exist. तो सभी लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम उस छाया का आनंद उठा सकें जो वास्तविकता में है ही नहीं। What is a mango in this world? इस संसार का आम क्या है? Why does a mango exist? We like to eat sweet, delicious mango. हमें चाहिए कि हम एक स्वादिष्ट आम का आनंद लें। But actually, that mango is said not to exist because it exists temporarily. पर ये आम को कहा जाता है कि ये है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्षणिक समय के लिए होता है। You let it sit for due course of time, it will start oozing juice, it will become black, in due course of time, it will become dust. No more mango. हाँ, तो जैसे आम है उसमें जूस होता है, धीरे धीरे वो क्षीण होता जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो डस्ट, मिट्टी की तरह हो जाएगा। So why is there a mango? पर फिर आम है क्यों? Because there's a mango in the spiritual world. आम इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में आम होते हैं। And this material world is a reflection of spiritual reality. तो ये भौतिक जगत है जो आध्यात्मिक जगत का एक So छाया है। we're looking for love, we're looking for acceptance, we're looking for happiness, but we're looking in the wrong place. तो हम चाह रहे हैं कि हमारे को प्रेम मिले, खुशी मिले, लेकिन हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। Because you can't pick mangoes from a reflection. क्योंकि हम आम का आनंद नहीं ले सकते एक छाया से। And you can't find love in the arms of a man or a woman. तो इसी तरीके से हम एक प्रेम नहीं पा सकते एक स्त्री या पुरुष की दुनिया में। But this is the lie of material life. पर यही जीवन है भौतिक जगत में। Actual love means service. वास्तविकता में प्रेम का अर्थ है सेवा करना। Like a man may say to his wife, I love you, dear. जैसे एक पुरुष स्त्री को अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ। She may say, like, if you love me, can you get a job? तो स्त्री बोलती है कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो क्या एक जॉब कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। Water is coming through the roof. There's no food in the refrigerator. The kids are hungry and have no shoes. तो यहाँ पे ऊपर छत भी नहीं है और यहाँ पे जूते भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है फ्रिज में। Oh, no matter. I love you. कोई बात नहीं, मैं आपको प्रेम करता हूँ। Doesn't love mean service? क्या ये वास्तविकता में सेवा है? If you love someone, you serve them. अगर आप प्रेम करते हैं तो सेवा करेंगे। So in Krishna conscious relationships, there can be love कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि सेवा between devotees. भक्तों के बीच में। Husband devotee, wife devotee, there can be love. तो जहाँ पर भक्त पत्नी है, भक्त पति है, तो वहाँ पर प्रेम हो सकता है।
There is no other love in this world. Love, otherwise it's simply lust. I love you, but what does that mean? I want to have sex with you. इसके अलावा पूरे जगत में कोई प्रेम नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बोलता है प्रेम है तो उसका मतलब यही है कि मैं आपके साथ संभोग करना चाहता हूँ। I want to pull your body towards mine to satisfy my senses. Most selfish thing. तो मैं आपके शरीर को खींचना चाहता हूँ अपनी तरफ ताकि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकूँ। So we dovetail that by what? By having children. तो ऐसा हम कर सकते हैं अपने संतान उत्पत्ति के लिए। Sometimes we hear criticism of Srila Prabhupada. कई बार हम श्रील प्रभुपाद की निंदा भी होती थी। They say he was so orthodox, so strict. This is a result of his Bengali upbringing, his cultural prejudice. तो आप एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले हो क्योंकि आप एक बंगाली परंपरा से आते हैं। Sex for babies? This is his cultural prejudice. तो क्या ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए संभोग किया जाए? ये तो बिल्कुल गलत है। This is 2023. Chill out. Enjoy yourself. 2023 है, ठंडे रहो, मजे करो। I'm not making this up. This has come to our society. ये हमारी सोसाइटी में नहीं है। आगे मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी का। ये हमारे समाज का हिस्सा है, मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बोला। This is not Srila Prabhupada's prejudice. ये श्रील प्रभुपाद का मंशा नहीं है। It is Shastra. 11th canto Srimad Bhagwatam. Sex is for babies. Twice 7th canto Srimad Bhagwatam. Sex is for babies. तो ऐसा 11वें स्कंद में बताया जाता है कि जो संभोग है केवल संतान उत्पत्ति के लिए जाए, और फिर 7वें स्कंद में भी ऐसे बताया जाता है कि संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए। Now what if a devotee can't follow that principle perfectly? पर जो केवल भक्त हैं वो उसे फॉलो करते हैं सिद्धांत को। In my experience, my personal experience and the experience of counseling of the devotees, there comes a time in most devotees' lives where they cannot follow absolutely 100% perfectly. कई सारे प्रभु जी अपने तजुर्बे में बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे भक्त हैं जो अभी भी जो डिवोशनल लाइफ के जो सिद्धांत होते हैं ठीक से पालन नहीं कर पा रहे। Shall we give up? तो क्या हमारे को छोड़ देना चाहिए? I'm so hopeless, I can't be a good devotee. मैं एक बहुत ही निराश हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा भक्त नहीं बन पाऊँ। You get up, you pick yourself up from fall down, and you keep going. खड़े हो जाओ और उसे पालन करने का प्रयास करें। Bhumauskalita padanam bhumiriva valambanam tvayi jata puradhanam tvameva sharanam prabhu. We say this in relationship, worshiping the deity. तो हम भगवान के संबंध में भगवान की जो विग्रह हैं उनकी सेवा करते हैं। It means that if you're walking on the earth and trip and fall on the earth, what other shelter do you have but the earth? तो अगर आप पृथ्वी में चल रहे हैं गिर जाते हैं तो इसके अलावा तो उस स्थिति में आपके पास पृथ्वी के अलावा और कौन सी शरण है? So a devotee trips and falls in his spiritual life, there's no other shelter but Krishna. तो अगर कोई भक्ति में गिर भी जाते हैं तो उनके पास भक्ति के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं, There's no other shelter but the holy name. और उनके पास कोई और सहारा नहीं, केवल हरि नाम है। So we should understand that if there's some fall down, it's not the end of your spiritual life. अगर कुछ ऐसा होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया है। You pick yourself up and you keep going. तो अपने आप को संभालें और दोबारा से प्रयास करें। Rape is sex. Rape is sex. जो बलात्कार है वो संभोग है, Sex outside of marriage is sex. और जो विवाह के अतिरिक्त है जो वो भी संभोग जैसे ही। Sex with a child is sex. बिना पुत्र के बिना संतान की इच्छा के जो सेक्स किया जाए वो भी संभोग ही है। Homosex is sex. हम जो पुरुष में हो वो भी सेक्स ही है। It's the same physiological experience. ये सेम ही है पूरा फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस। But these are demoniac या आसुरिक, expressions of sexual desire. तो ये पूरा आसुरिक है कि ये संभोग की इच्छा करना। Can it be equated with the husband and wife out of attraction for each other who slip and fall? क्या ऐसा संभव है कि स्त्री और पुरुष एक साथ रहें ऐसे? It's not the same. ये संभव नहीं है। One is capital S, capital I, capital N, sin. Pop. ये पाप है। Capital P, capital A, capital P, capital A, pop. ये पाप है। And between husband and wife, they slip and fall. Small p, small a, small p, small a. It's a stumbling block. It's a stumbling block. Paripantano in their spiritual life, but it's not the end of the world. तो ऐसे ही भक्ति में भी होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये
अंत हो गया है। Brahmacharis have their maya also. ब्रह्मचारी भी कई बार माया होते हैं, We're intoxicated by this desire to enjoy sexual pleasure, तो वो भी कई बार इससे भ्रमित हो जाते हैं इस इच्छा से, and it has to be given up. बट वो इसे छोड़ते नहीं है। No compromise, पर इसमें कोई भी समझौता नहीं करना है, because it is 180 degrees different from love of God. क्योंकि ये पूरी तरीके से 180 डिग्री अलग है भगवान के प्रेम से। No hypocrisy. इसमें कोई भी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। When Lord Chaitanya heard, he was served some first class rice. तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो पूरे फर्स्ट क्लास उसमें उतरे बन थे। And he asked, who has gotten this rice? सॉरी, राइस Chawal. हाँ, क्लास चावल है। पहले एक नंबर एक क्वालिटी के चावल आए थे। And where was it obtained? कहाँ से आए थे? He said, oh, Chota Haridas. छोटा He हरिदास got लेकर this आए। rice. छोटा हरिदास लेकर आए। He said, I don't want to see the face of Chota Haridas ever again. Don't show him. I don't want to see him. तो मैं दोबारा छोटा हरिदास का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, उसको बोल दीजिए मेरे से यहाँ से चले। Chota Haridas became very despondent and took his own life. तो छोटा हरिदास थे वो बहुत दुखी हो गए। Mahaprabhu said, good. क्योंकि महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। But when he saw that the wife of Shivananda Singh was pregnant, he said, very good. पर उन्होंने देखा कि उनकी जब लेकिन शिवानंद सिंह की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो महाप्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत प्रसन्न हुए। So what can we understand from this? पर इससे हम क्या समझ सकते हैं? That Lord Chaitanya Mahaprabhu was completely intolerant of hypocrisy. और तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो दोगलेपन से बहुत ज्यादा नाराज थे। No cheating. कोई भी धोखा नहीं चलेगा। So once a sannyasi, brahmachari, you have no scope for having a relationship with any woman. तो जब अगर आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं तो आपके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी स्त्री से संबंध रखने की। And the grihastha has no scope for having a relationship with any woman he is not married to. तो ऐसे ही गृहस्थ के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखे। It's not that because one's a grihastha he can have a fun time laughing and joking with other men's wives. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गृहस्थ किसी पत्नी के साथ हंसी मजाक करे। Why is that? ऐसा क्यों? Shastra tells us. शास्त्र हमें ऐसा बताते हैं। No. What is this verse? Brahmachari Sita. परदारिश, Not that verse. परदारिश, मात्रा परदारिश। No, not this verse. Matra swastra duhitkava navivikta sano bhavet balavan indriya gramo vidvamsam apikarshati. Shastra says, don't sit on the same asana with your mother, with your sister, or your daughter. तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि आप उस जगह पे बराबर में ना बैठे जहाँ आपकी माता है या आपकी बहन है या अन्य या डॉटर है, आपकी पुत्री। Vidvamsam apikarshati. Even someone may say, what kind of degraded person will become disturbed, sexually disturbed by his mother, his sister, or his daughter? What kind of degraded person? पर कोई बोल सकता है कैसे मान सकता है कि अपनी माता के साथ, पुत्री के साथ या फिर बहन के साथ नहीं बैठ सकते। No, vidvamsam apikarshati. Even the most learned person can become affected by sexual desire in this circumstance. क्योंकि विद्वान व्यक्ति भी ऐसा संभव है कि हो जाए, आकर्षित हो जाए स्त्री से। So in progressive cultured societies, there's separation between men and women. तो जैसा आज के समाज में दिखता है कि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। We offer respectful pranams to Matajis. तो वैदिक समाज में देखते हैं कि हम जो अन्य माताएं हैं उनको प्रणाम करते हैं। We don't say, hey baby. लेकिन जो आजकल में दिखता है उसमें क्या बोलते हैं? We say Mataji. पर हम बोलना चाहिए माता जी। With respect. पूरे सम्मान के साथ। Sometimes ladies are upset with this term Mataji. कई बार माताएं बड़ी खिन्न होती हैं कि उनको माता जी बोला जाता है। That I want to be a Prabhu. मैं प्रभु बनना चाहती हूँ। You can't be a Prabhu. आप प्रभु नहीं बन सकते। You don't want to be a Prabhu because Mataji is more than Prabhu. क्योंकि माता जी की जो महत्व है प्रभु से ज्यादा है। Prabhupada said, you may forget your father, but you can never forget your mother. ऐसा संभव है कि अपने पिता को कोई भूल जाए लेकिन अपनी माता को कोई भूल जाए, ऐसा संभव नहीं है। And we think Mataji is sitting in back, they're not sitting with the men.
The chummy, old chummy, hanging out. तो माता एक साथ बैठे हैं, प्रभु जी साथ बैठे हैं और वो एक दूसरे ऐसे छवि छवि। This is cultured society. पर ये एक सभ्य समाज है To suppress the animalistic propensity to enjoy sex. जो पशुवाहित इच्छाएं उनको दबाया जाए और And what do we find outside these doors? पर जैसे ही हम मंदिर के गेट से बाहर निकलते हैं, Just do it. बस करना है। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? You know, dress anyway, act anyway. आप किसी तरीके के कपड़े पहने, कुछ भी करें। And this is the propaganda that's attacked every country, even Bharat, it's attacked your country. तो यही पूरी कल्चर है, यही पूरी मानसिकता है। Movie industry. जो फिल्म इंडस्ट्री है। Who is the hero in a movie? कौन हीरो होता है? He's a tough guy. Right? Wears a black leather jacket, hasn't shaved for 3 weeks, drinks alcohol, smokes, has a gun. तो उसके बाद बड़ी दाढ़ी है, वो धूम्रपान कर रहा है, उसके बाद बड़ी बंदूक है। Rides a motorcycle, has 10 girlfriends. उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है और 10 उसकी सहेलियां हैं। Is he a religious man? क्या वो धार्मिक व्यक्ति है? Who's faithful to his wife? क्या वो अपनी पत्नी के प्रति? Who goes to the mandir? Who goes to the mandir? क्या वो मंदिर जाता है? And the lady, how are the ladies presented? लेडी मतलब माताओं से कैसे देखते? The ladies in the movies, there's 2 guys fighting over her. 2 लड़के उसके आसपास घूम रहे हैं। And she's had 10 boyfriends before that. और उसके भी 10-10। She shows her whole body to the world. Here I am, want to touch me? तो पुरुष होते हैं और वो अपने कपड़े ऐसे खोल के दिखाते हैं। And she smokes and drinks. वो भी धूम्रपान करती हैं और What does that do to the mind of a juvenile, prepubescent young girl? अब इसे देखने से क्या होगा आपके पूरे दिमाग में? She thinks she's the movie star. Everyone loves her. All the boys love her. I want to be like that. और वो अभिनेता है तो लोग चाहते हैं कि उनकी तरह बनना चाहते हैं। And because of that, you see little girls trying to be big girls, shaking their body like big girls. तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने शरीर को बड़ी जो स्त्रियां हैं उनकी तरह हिलाएं। With eyeshadow, makeup, lipstick, hair done up. You know, she doesn't even have breasts yet, and she's trying to be a big girl. Why? By this nonsense propaganda in the movie industry. तो अलग अलग तरीके से श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक आदि लगाकर, और वो बड़ा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूवी में वो हीरोइन को देखा और उनकी तरह बनना चाहते हैं, जबकि अभी तक उनके वक्षस्थल भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। And who are the bad guys? Who are the cheaters, the rascals? ये सारे के सारे धोखेबाज हैं। The panda, the brahmin, the purohit, the devotee. तो ये पंडा, पुरोहित या डिवोटी, समाज कहता है कि ये लोग पखंडी हो, पंडा, ब्राह्मण, डिवोटी। ये भी पखंडी हो। In this way, society is being intentionally brainwashed, intentionally brought to the stage of animal life. जानबूझ के उनका दिमाग में ये सब चीजें भरी जा रही हैं ताकि वो पशुवत व्यवहार करें। So our response to this is varnashram dharma. हमारा इसके बदले में कहना है कि वर्णाश्रम धर्म। That if you want to be brahmachari, be real brahmachari. अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो पूरी तरीके से ब्रह्मचारी बनिए। You want to be grihastha, be responsible men. Take care of your wife, love your wife, take care of your children. अगर आप गृहस्थ बनना चाहते हैं तो अच्छे गृहस्थ बने, अपनी पत्नी का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं। And live past your material desires. और अपनी जो भौतिक इच्छाएं उन्हें पीछे छोड़ें। They can't be given up. You snap your fingers, like overnight, goodbye lust, overnight. पर ऐसा संभव नहीं है कि वो चुटकी बजा दी या एक रात में ये इच्छा खत्म हो जाए। Impossible. असंभव है। Of course, nothing's impossible with Krishna. But practically speaking, impossible. तो ये वास्तविकता में प्रभुजी तजुर्बे से बता रहे हैं क्या संभव है। So live past your material desires. Leave this material world. Leave material desires. Leave Maya. तो इसको जो भौतिक इच्छाएं इनको पीछे छोड़ते जाएं। Because what is the attraction between man and woman? It is simply Maya. तो जो क्या आकर्षण है, जो केवल माया है। Nothing less. It is simply Maya. केवल माया है। What is a woman's body? तो स्त्री का शरीर क्या है? What is a man's body? तो पुरुष का शरीर क्या है? It's the same thing. ये एक ही चीज है। Let's say we'll take a piece of woman's bone and a piece of man's bone. We'll put them side by side. अच्छा, दोनों की अगर हड्डियों को देखा जाए तो दोनों एक ही जैसी दिखती हैं। Are they different? It's both bone. ये हड्डियां ही हैं।
You put some muscle, man's muscle, a piece of woman's muscle, flesh, side by side. Is it different? तो उस पर अगर कुछ मांस लगा दिया जाए स्त्री की हड्डियों पे या पुरुष की हड्डियों पे तो वो एक ही जैसा है। Put woman's blood, man's blood side by side. Is it different? तो स्त्री का जो खून है और पुरुष का जो खून है वो भी Fat, skin, hair, blood, bone. It's the same fat, skin, hair, but we think, oh, I love you. तो उसमें देखा जाए जो चाहे चमड़ी है, चाहे बाल हैं, हड्डियां हैं, मांस है, सब कुछ एक ही जैसा है पर फिर भी अट्रैक्टेड होते हैं। You're so beautiful, your hair, your skin. You glow like the moon. Your eyes are like liquid pools of nectar. तो आपके बाल इतने सुंदर हैं और आपका चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसा है। Okay, you have one. ये लो, आँख ले लो। This is not Maya. ये माया है। Are we not confused? क्या हम कंफ्यूज नहीं? So this is our solution. Follow the principles of Varnashram. तो Be honest about your position in society. यही उपाय है कि हमारे को वर्णाश्रम का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। This is why this dress, why this saffron dress. तो इसीलिए ये सैफरन कलर की ड्रेस है। Most honorable position. सबसे ज्यादा सम्मान है। The Tyagis, the renunciates, who give everything to society for the welfare of society and service to God and Guru. जिन्होंने Exclusively. सब कुछ त्याग दिया है समाज के लिए, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। But this is big. Varnashram is a big topic. तो ये वर्णाश्रम बहुत बड़ा टॉपिक है। So another thing we should understand, this is analogy. These descriptions are analogy. तो ये जो इससे इन कहानियों से हम समझ सकते हैं। And we don't discriminate against women. तो हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। To protect women, that they sit in back, that we fold our hands, say Mataji, isn't discrimination. ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि माताओं को पीछे बिठाया जा रहा है। It is protecting them. ये एक्चुअली में उनकी रक्षा की जा रही है। Because unmarried women, Srila Prabhupada explained, unmarried women will create havoc in society. तो जो अविवाहित स्त्री है वो पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा बवंडर ला सकती है। Because the reflection of woman's power over man is originally coming from Radha Krishna. तो जो छाया है जो आ रही है स्त्री से वो एक्चुअली में वास्तविकता में राधा रानी से आ रही है। Krishna is Madan Mohan. कृष्ण मदन मोहन है। He is so attractive, he bewilders even Cupid. तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है कि वो ना केवल कामदेव को भी आकर्षित कर सकते हैं। But who is Srimati Radharani? कौन राधा रानी कौन है? Madan Mohan, Mohini. राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। Krishna is bewildering everyone, even Cupid, but Srimati Radharani bewilders Krishna. तो भगवान कृष्ण कामदेव को आकर्षित करते हैं और राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करते हैं। So by the creation of God, women has great power over men. भगवान की सृष्टि से जो स्त्रियां हैं वो पावरफुल होती हैं। Beginning with Srimati Radharani. राधा रानी की शुरुआत होती है। So that power has to be harnessed, directed in a positive direction. तो ये जो शक्ति है वो सही डायरेक्शन में लगाई जानी चाहिए। Where a wife serves her husband. तो पति की सेवा करे And husband serves his wife. तो पति अपनी पत्नी की सेवा करे And harmoniously they make progress in spiritual life. और यही रहेगा कि अच्छा सामंजस्य हो ताकि वो भक्ति में प्रगति करे। Like bird has two wings like this. जैसे एक चिड़िया के दो पर होते हैं, They can't fly one wing. वो एक पर से उड़ नहीं सकते। They're opposite, they're very different, but when they cooperate, you go forward. पर दूसरा वाला बिल्कुल अपोजिट है, पर दोनों एक साथ चलेंगे तो वो उड़ पाएंगे। So these lessons we learn from Srimad Bhagwatam. ये जो शिक्षा है हम सीखते हैं श्रीमद् भागवतम। Shastra Vidhi, how to be happy. शास्त्र विधि कैसे प्रसन्न रहे। If we neglect the Shastra Vidhi muchaja vartate kamakara, na siddhim avapnoti na sukham na paramgati. No perfection, no elevation, no happiness. If we reject the instructions of Shastra. तो अगर हम शास्त्रों को चाहे उसको नहीं मानते हैं तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं होगी, कोई प्रसन्नता भी हमें प्राप्त नहीं होगी, कोई खुशी भी प्राप्त नहीं होगी। Many people have different ideas, even in our society. कई लोगों के अलग-अलग हमारे समाज में भी। Shastra is the center of everything. शास्त्र हमेशा केंद्र में रहने चाहिए। Where does Srila Prabhupada get authority? श्रील प्रभुपाद ने कहाँ से? From Shastra. शास्त्रों से ही बने। Prabhupada doesn't give Shastra authority.
प्रभुपाद ने शास्त्रों को ही बताया। He said Shastra is the center of everything. श्रील प्रभुपाद ने हमेशा बोला है कि शास्त्रों जो है हमेशा सेंटर में है। So to know what is true, what will elevate us, what will degrade us, what will take us back to God, and we find in the pages of Shastra. तो हमें पता होना चाहिए क्या हमारी प्रोग्रेस करा सकता है, क्या हमारे को नीचे लेके जा सकता है। अगर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वो पता चलेगा कैसे हम भगवान तक भी जा सकते हैं। So these are difficult topics to speak on, especially in mixed company. तो ये बहुत ही कठिन तथ्य है जिस पर चर्चा की जाए, वो भी जब दोनों मिक्स सोसाइटी बैठे। So please forgive me if I made any mistake or said something wrong. तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ गलती की थी। Does anyone have any comment or question? किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न है? Yes, Prabhuji. ट्रांसलेट भी कर दूंगा। I'm just taking remnants after your class, Prabhuji. I'm just taking remnants of your class. Your Uchishta. Years back, there's a concept of feminism has come into the picture, where women are equal to men. But nowadays, this new term has come in the market, which is called the women are superior to men, with patriarchy. That's now the next level they're going. So, would you like to throw some light on this kind of? In some ways, women are superior to men. In some ways, men are superior to women. It's not that a woman is a, what do you call, a doormat where you wipe your feet. She's not a doormat. Actually, you should translate, you should say in Hindi. So. He'll translate. मेरा प्रश्न था कि कुछ साल पहले समय है वो पुरुषों के बराबर है और आज की डेट में ये उसके ऊपर एक लेवल जा रहा है। वो ये कह रहा है कि स्त्रियां पुरुषों से भी आगे हैं। तो मैंने प्रोग्राम के तो उस प्रकार का प्रोग्राम कह रहे हैं कि कुछ जगह पे स्त्रियां पुरुषों से आगे हैं और कुछ जगह पे पुरुष स्त्रियों के आगे हैं। दोनों का अपना अपना एक नेचर स्वभाव है। ऐसा नहीं कि स्त्री पायदान है जो पैर पहुंचते हैं उसके ऐसा नहीं। And that's why I mentioned that what women give to society, the role they play in society is irreplaceable. इसलिए मैंने बताया कि जो स्त्रियों का रोल है समाज में वो किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। Mother's love. जैसे माता का प्रेम है। And Srila Prabhupada also mentions that in gatherings, you see the majority of people are female. आप देख सकते हो प्रभाव बताते हैं तो कहते हैं कि सामने इकट्ठा होकर ज़्यादातर माताएं हैं। Because they have natural affinity to love, to nurture, to serve. क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल स्वभाव है सेवा करने का, प्रेम करने का। Men have this big ego. पुरुषों में बहुत ज़्यादा अहंकार है। But this is a huge obstacle to progress in bhakti. और ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। Bhakti is everything. Krishna responds to bhakti, not to ego. भगवान आप भक्ति के साथ आराम प्रदान करते हैं कि अहंकार के साथ। So in this way also, women are superior to men. इस तरह ये स्त्रियां पुरुषों से आगे हैं। Sometimes there's a misunderstanding. We find in Shastra that women are quote unquote less intelligent. जैसे कई बार ये कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्रियां जो है कम बुद्धिमान हैं। We should understand carefully the meaning of this statement. इसको हमें बहुत सावधानी से समझना चाहिए। What does intelligence mean? बुद्धि का मतलब क्या है? Shastra describes intelligence means the ability to discriminate the difference between matter and spirit. तो शास्त्र बताते हैं बुद्धि का मतलब है कि ये जानना कि पदार्थ और चेतन में क्या अंतर है। To intellectualize. इसको समझ आना चाहिए। इसको बुद्धि बता। This is man's nature. He wants to intellectualize everything. Linear thought, fix it, do the right thing. Linear thought. A to B to C to D. This is a solution. जो पुरुषों का बुद्धि कैसा होता है कि सीधा होता है जैसे A है B है C है D है ऐसा। Woman's typical nature, she feels. She's emotional. This is a huge asset in spiritual life. तो स्त्रियां होती हैं स्वभाव से इमोशनल फील करती हैं, एहसास करती हैं, उनके लिए बड़ा एसेट है भक्ति में।
But from the perspective of jnana, this is said to be less intelligent. लेकिन ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो ये कम बुद्धि वाला है। And is an asset because the woman is loving children, loving husband, keeping family together. तो लेकिन ये एक एसेट है कि स्त्रियां जो होती हैं वो बच्चों को प्रेम करती, पति को प्रेम करती, पूरे परिवार को प्रेम करती। Can she think, you're not my husband, you're spirit soul. These kids are not my kids, they're spirit soul. Take care of yourselves. I'm going into meditation. या वो ऐसा बोल सकती है कि तुम जीवात्मा हो, मेरे बच्चे जीवात्मा हैं, मौका का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। And this is irreplaceable contribution to society that women give. जो माताओं का जो contribution है इस समाज में उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। So when we talk about women being Maya, our attitude towards women is Maya. Woman's not Maya, she's just a woman. तो जब ये कहते हैं स्त्रियां माया है, तो स्त्रियां माया नहीं है, ये हमारा जो दृष्टिकोण है वो माया है। स्त्रियां तो जीवात्मा है। And that attitude has to be given up. ये दृष्टिकोण जो है उसको त्यागना पड़ेगा। Because a brahmachari or any man who thinks that women are the problem, women, straight. You'll never make progress in spiritual life. अगर कोई ब्रह्मचारी ये सोचता है स्त्री है, ये समस्या है, वो कभी आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। It's your attitude that you want to enjoy women. And because you want to enjoy, the opposite is renunciation. ये आपका जो दृष्टिकोण है एंजॉय करने का, एंजॉय का जो विपरीत है वो है त्यागना। This is not the vision of a self-realized person. ये एक आत्म साक्षात्कार और व्यक्ति का ये बात नहीं है। Vidya meniya sampane bhamini gavi hastine shuni chayava svabhakija pandita samadarshi. We should be samadarshi. We respect everyone. हमें समदर्शी होना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। But Prabhupada comments, respecting everyone doesn't mean you embrace a tiger. सबको सम्मान देने का मतलब ये नहीं प्रभुपाद कहते कि आप जाके शेर को गले लगा। So we respect everyone, but one should not disregard social norm of not intimately associating with someone who you're not married to. तो सम्मान करने का मतलब जो सामाजिक जो नियम है उसका भी पालन करना है। इसका मतलब यही कि आप किसी और स्त्री को जाकर गले लगाएं। So feminism is a joke. It's a sad, unfortunate joke. ये जो फेमिनिज्म है एक मजाक है, बताओ रहा है। Prabhupada said that feminism is a plan by the men to cheat the women. प्रभुपाद जी कहते हैं फेमिनिज्म क्या है? स्त्रियों को धोखा देने के लिए पुरुषों का बनाया हुआ है। Do you want to be independent? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? Great. हाँ, I will enjoy you, and then you're on your own. मैं तुम्हें एंजॉय करूंगा, फिर तुम अपने आप को। Oh, you're pregnant. Oh, sorry. You're liberated. You're a liberated woman. You're on your own. Bye. This is demoniac culture. So-called liberation. And material world means where everyone is trying to be the boss. The women want to be the boss, the men want to be the boss, everybody wants to be the boss. We reject the boss mentality because Krishna is the boss. Ishvara Parama Krishna. Not men or women. We're all servants. We're all equal in the eyes of God. He says, Mam hi parta vipashatya ye pisu papayo striyo vaishristata shudras te piyanti param gatim. Everyone goes back to God and whoever takes shelter of Krishna. So we should live these things, not just talk about them. And be happy in the association of devotees. And harmonious, respectful relationships between men and women. And if we show this to the world will come to our society. Because there's no future and there's in the way they live their life. I should say no good future in the way they live their life. Only hopelessness, misery, depression, and defeat.
Any other thing? Mataji? Justice. That's it. In our own society. मतों को एक साइड में रखा जाएगा ये भी बात नहीं सकते शास्त्रों के अनुसार बात ये दोष जो बात आती है तो ये चीजें नहीं मिलेंगी क्या उसकी मेरा तो ऐसा क्यों वो बताए So, Mataji is asking that we know that, women are Bhagwatam and all that. Still in our society, we find a lot of discriminations between men and women. Why is that? Because men and women are different. People say discrimination is a bad word. हमें जैसे discrimination का भेद करना आगे गलत चल रहा है, स्त्रियों को दोनों अलग है। What is life without discrimination? भेद के बिना क्या जीवन है? Everyone has their role to play. सबका अपना अपना एक रोल है जो उसको मिला है। Is that right? जैसे ही Everyone has a role to play. सबका एक अपना एक किरदार। And in spiritual life, our objective is to please Krishna, और आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो गोल है, लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। who makes no discrimination whatsoever. He makes no discrimination कृष्ण whatsoever. कोई भेद नहीं करते, कोई भी हो। For example, Prabhupada gave example. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। Said if the pujari is offering a flower to the Lord, and he takes that flower and puts it on the feet of the deity, and there's an insect on the flower, if that insect touches the feet of the deity, that insect is as good as the pujari. प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पुजारी है, भगवान को पुष्प अर्पित करता है, अपने चरणों में रख देता है, तो वही वहाँ पे जो अगर पुष्प की कीड़ा है, वो कीड़ा भगवान के चरणों में अगर टच करता है, तो उस कीड़े में पुजारी में कोई भेद नहीं होता वहाँ। He also said the person who's dressing the deity and the person who's washing the floor, same. जो एक पुजारी है जो भगवान को वस्त्र पहना रहा है, या एक और दूसरा व्यक्ति जो मंदिर का फर्श साफ कर रहा है, वो कोई अंतर नहीं। So there is discrimination. We discriminate और हम भेद करते हैं because this is Krishna conscious to discriminate. क्योंकि भेद करना भी कृष्ण भावना है। That is a revolutionary statement that many people will find unpleasant, but it is a fact. ये क्रांतिकारी वाक्य है, लेकिन लोगों को बड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन From the social point of view, we discriminate. इसी सामाजिक दृष्टिकोण से हम भेद करते हैं। Can I walk up to you, Mataji, put my arm around your shoulder, say, "Nice job, you did a great job organizing the Sunday feast. Wow." क्या मैं आपके पास आकर आपके गले में ऐसे हाथ डाल के बोलूं कि आपने संडे फीस्ट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया? There's rules in society, there's social constraints, there's discrimination. तो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम है जो हमें थोड़ा रोकते हैं, तो ये भेद है, ये A right way to do things and a wrong way to do things. सही तरीका है करने का, गलत तरीका है। This is a big topic also, Mataji. ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। And we won't solve all the problems in one question and answer section in Bhagwatam class. तो इस भागवतम कक्षा में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। But be satisfied, you're going back to Godhead. What more you want? आपको संतुष्ट रहना चाहिए कि आप भगवत धाम जा रहे हो और क्या चाहिए। You do so much service. I've seen pursuing. मैंने इस पर्सनली देखा आप कितनी सेवा करते हैं। What more we want? We want to go back to Godhead. And we accept anything that will take us a step closer. और हम कुछ भी उसको स्वीकार करेंगे जिससे हम भगवान का निकट जाए। So in the name of social relationship, social intercourse, we discriminate. तो जहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण आता है वहाँ पर भेद करते हैं। And this is revolutionary. People don't like it. They criticize this kind. Oh, you're pushing women down. You're this. You're that. You're misogynist. तो इसलिए इस कौन को लोग निंदा भी करते हैं कि तुम लोग इस तरह से भेद करते हो स्त्री पुरुष के बीच में।
woman haters. women haters, स्त्रियों को की वो Now we love women. There's no ISKCON without the contribution of the ladies. तो हम स्त्रियों को प्रेम करते हैं, हम जानते हैं कि स्त्रियों का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। 50% of our progress as a society is coming from the ladies, from the Matajis. और इस समाज जो आगे बढ़ा है उसकी बढ़ोतरी में 50% की योगदान स्त्रियों का है। But there's separation between men and women. पर स्त्रियों और पुरुषों में थोड़ा भेद है। Why? This verse, Matra Swasya Duhityama, Navi Vakta Asano Bhavet. You can't put men and women, because women are like fire. And men, I'm sorry, but we're like butter. रोजी और श्लोक कोट कर रहे हैं कि और इकट्ठे नहीं डाल सकते स्त्री पुरुषों को, क्योंकि स्त्रियां अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। So there's some separation. तो इसलिए थोड़ा सा अलग-अलग होना होगा। Except in married life. You put fire and butter together in married life, and what do you get? Ghee! आग और मक्खन इकट्ठा पास में आता है, तो ये मैरिड लाइफ, तो क्या मिलता है? घी। And with ghee we perform sacrifice. We bathe the deity with ghee. We prepare delicious food stuff. We offer ghee, diya. Krishna is so pleased with that ghee. By that combination of many women. तो घी से हम क्या करते हैं? भगवान के लिए अच्छा पकवान बनाते हैं, घी से दिया ऑफर करते हैं भगवान को, और भी कई प्रकार के मीठे प्यारे दिए जाते हैं, तो घी का मतलब अपने जीवन को समर्पित करते हैं। But in the material world, everybody wants to be the boss. भौतिक जगत में हम कोई बॉस बनना चाहते हैं। For that reason, we bow down to each other. इसलिए हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। When we offer obeisances to each other, that means the men are offering obeisances to you also, Mataji. जब हम प्रणाम करते हैं तो जो पुरुष है वो आपको भी प्रणाम करते हैं। I offer my obeisances to you. मैं आपको प्रणाम करता हूँ। Baram baram pranam ye. Okay, I wanted to say one thing. एक चीज मैं बोलना चाहूँगा। Watching all the devotees that were here for Mangalarti. Watching all the devotees that were here attending Mangalarti this morning. यहाँ पे सब भक्तों को जो मंगला आरती आते हैं सुनो को देखकर, How many devotees began this project in Rohini? कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था रोहिणी में? What is the history? इसका इतिहास क्या है? कितने लोगों ने शुरू किया? बहुत कम लोग, very few। Very few devotees. See how much you've grown. देख सकते हो कितना बढ़ गया है, कितना बड़ा हो गया है। Now extrapolate. You understand? Extrapolate. Extrapolate means do the math. If you've come from 5 to 500, from 500, how far can you go? तो इसको आप थोड़ा बनाइए कि 5 से आप 500 बने हैं, तो आप सोचिए 500 से कितना। By your preaching activity, men and women preaching activity, you've done so much. You've created such a large society. वो दोनों ही माता जी और प्रभु जी ने मिलकर अपने प्रचार के माध्यम से बड़ी सोसाइटी बनाई। And your temple is not even open yet. अभी तो मंदिर खुला भी नहीं। Radha Madhava haven't come yet. राधा माधव को भी यहाँ बाकी है। What is your future? आपका भविष्य क्या है? Please think this over carefully. इसको ध्यान सावधानी पूर्वक सोचें। How much responsibility is coming to you? कितना ज़्यादा आपके ऊपर दायित्व आने वाला है? Because the fact is, you have to sit here someday, and there's going to be young devotees in front of you, and you're supposed to help them. You're supposed to teach them. और सच्चाई ये है कि एक दिन आप यहाँ पर बैठे होंगे और आपके सामने बहुत सारे नवभक्त होंगे जिनको आपको प्रचार करना, आपको गाइड करना। Immeasurable blessing and spiritual happiness will come to you just doing what you're doing. तो असीमित कृपा और असीमित आनंद आपके रास्ते में है, वो करने को करते जाओ। But give up self-centeredness, give up self-interest, act with integrity. अपना स्वार्थ को त्याग दीजिए और इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी के साथ सेवा करें। That we're here to serve God and Guru, हम यहाँ पर कृष्ण और गुरु की सेवा करने, not to be the boss of anyone, और किसी के बॉस बनने को, not to accept anyone's worship, और किसी और की पूजा करनी है, and have influence and praise.
ना कोई नेम करने के लिए कि हमें हमारी को प्रशंसा करें। We're eternal servants of Jagannath Swami and our gurus. और हम अब जगन्नाथ स्वामी के और अपने गुरु के सनातन सेवक हैं। Then 500 will become 5,000, 5,000 will become 5 million. 500 से 500 से 5,000, 5,000 से 50 लाख बनेंगे। Think down the line, how many generations of people will come to your temple, become enthused in spiritual life, and go back to guided because of what you're doing today? जो आप आज कर रहे हो, जनरेशन आगे आगे रहेगी और वो यहाँ पर आएंगी, दर्शन करेंगे और भगवत नाम लेंगे। Is that correct? Am I doing the math properly? क्या ये मैं गणित सही से लगा रहा हूँ? Please think this over carefully. उसको सावधान पूर्वक उसके ऊपर विचार कीजिए। Srila Prabhupada ki, ISKCON Rohini ki, all glories to assembled devotees.